I would like to see everybody with the camera switched on. BCA first year. I don't want to repeat it again and again. So today we are doing the essay section. In the last class we did India Again by Edward Morgan Foster. And today we are doing On Being a Bore by Robert Lind. So one of you please read the content while I explain. Yes. So this is the essay written by Robert Lind on being a bore. ये एक ह्यूमरस ऐसे है, मतलब ऐसे written in light mood for light reading, and the purpose is purely entertaining. And जैसा कि आप लोगों ने पीपीटी भी देखा था कि ऑन बीइंग अ बोर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड इन सोसाइटीज होते हैं और किस किस तरह से वो लोग without knowing they are trying to bore one person or the other. Shall somebody please read the content? Read the content. आवाज नहीं आती कि आप लोग बिल्कुल शांत क्यों बैठ जाते हैं? Are you all dumb or something? Yes, ma'am. No, good afternoon, no good, nothing. बस आगे चुपचाप. Supposed to be literature class. Yes, ma'am. कोई मूवी देखने के लिए आया हो क्या? This is not a movie session. जब कुछ कहा जा रहा है पढ़ने के लिए, समझाने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है? Read. Yes. On being a bore, Robert Wilson Lind was an Anglo. 1 minute. On being a bore जो शीर्षक है, इसे क्या समझते हैं आप? On being a bore. Being मतलब बोर मीन्स मैम जैसे कोई मतलब बोर करता है, मतलब कोई भी अगर तुम किसी के लिए बोर बन जाते हो, yes. On being a bore, on being a happy person, on being, जब तुम लोनली बन जाते हो, जब तुम किसी के लिए हैप्पीनेस बन जाते हो, जब तुम किसी के लिए खुशी बन जाते हो, सैडनेस बन जाते हो, जब तुम किसी के लिए दुख का कारण बन जाते हो, on being happy, on being sad, सैड होने पे, जैसे आपने पढ़ा था वो on his blindness, अपने अंधेपन पे उन्होंने लिखा था. On being a bore, मतलब वो बता रहे हैं सोसाइटी की तरफ से लिख रहे हैं कि जब आप एनकाउंटर करते हैं, बहुत सारे बोर्ड सोसाइटी में होते हैं, ठीक है? तो ऑन बीइंग अ बोर, जब एक बंदा किसी के लिए, एक शख्सियत ऐसी हो जाती है जो किसी दूसरे को अपने चुप रहने के कारण, जैसे आप लोग चुप रहते हैं तो यू बिकम अ टोटल बोर, कि वन साइडेड कॉन्वर्सेशन हो रहा है, हम बोलते जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोलते, तो दिस इज नॉट डन. सो बोर कोई किसी के लिए बन जाता है तो उसी पर लिखा हुआ है, पूरी ऐसे लिखी हुई है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्स इन द सोसाइटी. सोसाइटी में बहुत तरह के बोर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला, नहीं बोलने वाला,
बिना मांगे किसी को एडवाइस देने वाला। ठीक है, तरह तरह के बोर्ड्स होते हैं। तो दिस essay is all about different kinds of boards in the society. Read. Robert Wilson Lind was an Anglo-Irish writer, editor of poetry, literary essayist, and a strong Irish nationalist. Born 20 April 1879, Belfast, United Kingdom. Died 6 October 1949, Hampstead, London, United Kingdom. Education: Royal Belfast Academical Institution, Queen's University, Belfast. Nationality: British Irish. His work include The Pleasures of Ignorance, I Tremble, I Tremble to Think, Old and New Masters, The Little Angel, a Book of Essays. तो रॉबर्ट ये सब विल्सन इनकी किताबें हैं जो इन्होंने लिखा किताबें है। थी। द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है कुछ नहीं जानने में भी बहुत खुशी होती है। प्लेजर का मतलब होता है प्लेजेंट फीलिंग, गुड फीलिंग, हैप्पी फीलिंग। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता भी एक खुशी का कारण बन जाता है। ठीक है, दूसरा है आई ट्रेम्बल टू थिंक। द वर्ड ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, मतलब सोचने से भी मैं कांप जाता हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक। एंड देन ओल्ड एंड न्यू मास्टर्स, एक ऐसे लिखा हुआ है जिसमें पुराने मास्टर्स कैसे हुआ करते थे, न्यू मास्टर्स कैसे होते हैं। वो मास्टर नहीं जो स्कूल में पढ़ाते, मतलब जिसके लिए आप काम करते हैं। कहीं आप एम्प्लॉयड हैं तो पहले के एम्प्लॉयर्स कैसे हुआ करते थे, अभी के एम्प्लॉयर्स कैसे हुआ करते हैं। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू मास्टर्स। एंड द लिटिल एंजल, अ बुक ऑफ एसेज। और उन्होंने पूरी किताबें लिखी है एसेज पर, और जिसका शीर्षक है द लिटिल एंजल, अ बुक ऑफ एसेज। चलिए रीड। Robert Wilson Lind occupies a prominent place among first rank of ageist till date. After completing his education, he became a journalist as well. He was the editor of the Daily News. He used to write an essay every week for the New Statesman under the pseudonym YY. अच्छा, रॉबर्ट विल्सन लिंड ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस। प्रोमिनेंट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। जब राइटर्स के बारे में बात आ जाती है तो उनको फर्स्ट रैंक ऑफ एसेज, मतलब सबसे द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। प्रोमिनेंट, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस, महत्वपूर्ण प्लेस उनका है इन द अमंग द फर्स्ट रैंक ऑफ एसेज टिल डेट, मतलब आज तक। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन ही बिकेम अ जर्नलिस्ट एज वेल। और उसके बाद वो एक जर्नलिस्ट बने। ही वॉज द एडिटर ऑफ डेली न्यूज, और डेली न्यूज एक न्यूज़पेपर था जिसमें वो एडिटर बने। एंड ही यूज्ड टू राइट एन एसे एवरी वीक फॉर द न्यू स्टेट्समैन अंडर द pseudonym YY। और हर एक हफ्ते उनका एक कॉलम छपा करता था। कौन से पेपर में? न्यू स्टेट्समैन में। और उन्होंने अपना नाम लिखा था Y.Y. pseudonym का मतलब होता है जो अपना नेम छुपा करके कोई और नाम रख लेता है इंसान, राइटर्स करते हैं ये। ठीक है, दे हाइड देयर नेम। तो रॉबर्ट लिंड ने अपना रॉबर्ट विंसन लिंड के नाम से नहीं लिखते थे, तो वो लिखते थे वाई के नाम से। इट मीन्स ही वॉज हाइडिंग हिज रियल नेम, और उनका पेन नेम था वाई। ठीक है, वन कैन नॉट डिनाई द चार्म ऑफ हिज सैटारिकल बट ह्यूमरस एसेज। और एक इंसान जो उनका ऐसे पढ़ता था वो इस बात पर ध्यान सोचने पर मजबूर हो जाता था कि वो किस तरह से इतनी वो सोसाइटी पर ही कटाक्ष करते थे, कमेंट करते थे, कभी कभी अपने बारे में भी बोलते थे कि किस तरह के वो इंसान थे। तो सटायर का मतलब होता है व्यंग। ठीक है, और ह्यूमरस मतलब हंसने हंसाने वाले। मैंने पहले ही कहा था दिस एसे इज ऑल अबाउट ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है रिटन इन गुड
taste, in good mood, and written for entertainment. ठीक है. His sense of language is admirable. और उनके लैंग्वेज का जो स्टाइल है, जो वर्ड्स वो चूज करते हैं, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, वो बहुत ही सिंपल है, इसीलिए वो एडमायरेबल है. एडमायरेबल का मतलब होता है कि प्रशंसनीय है. एंड हिज स्टाइल इज यूनिक. यूनिक का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यूनिक, अलग तरह का. डू नॉट एनोटेट. एनोटेट मत किया कीजिए. His style is unique in all respect, and coinage of words and expressions display an excellent character of his thought process. और वो सिंपल तरीके से जो वर्ड्स यूज करते हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है और एक्सेलेंट, बहुत अच्छा है. और उनकी जो कि उनकी सोच को, उनके विचारों को दर्शाता है सामने. The most characteristic feature of his essays is that the point is obvious. और सबसे अहम बात ये है, वो जो पॉइंट सामने रखते हैं कि वो बिल्कुल अपेरेंट है, ऑब्वियस है, लोग कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है. और उनके राइटिंग से लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि बिल्कुल सही लिखा है. बिल्कुल इसलिए कि वो रिसर्च करके लिखते थे कि सोसाइटी में ऐसा होता है, और उसी को वो सोसाइटी की चीजों को सोसाइटी को वापस देते थे अपने एसेस के दौरान. ठीक है. थ्रू हिज एसेस the reader instantly connects and is intrigued interestingly. और तुरंत कनेक्टिविटी बन जाती थी कि हाँ बिल्कुल सही लिखा गया है, ये तो मेरी कहानी लग रही है. हर वो शख्स जो पढ़ता था उनको लगता था कि हाँ दिस स्टोरी इज रिटन फॉर मी, ये तो मेरे लिए कही गई ये बात है. तो इतनी रिच उनकी थी रिसर्च वर्क. वो रिसर्च करके ही ऐसे लिखा करते थे और सोसाइटी की चीज वापस सोसाइटी को ही इंटरेस्टिंग तरीके से देते थे, जो जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे. नाउ रीड द एसे. The essay. The idea expressed in the given essay is very humorous on one hand and satirical. सैटायरिकल मतलब एक तरह से बहुत हंसने हंसाने वाली बात है, दूसरे तरह से कटाक्ष भी है, व्यंग भी है. Satirical on the other. The essay are reflections based on people's ideas and preoccupations. Both is the subject matter of the essay. तो इनका एक तरफ तो ऐसे एंटरटेनिंग है, ह्यूमरस है, एंटरटेन करता है, और दूसरी तरफ से ये कटाक्ष भी करते हैं, व्यंग भी कर रहे हैं सोसाइटी पर. ऐसे जो वो ऐसे लिखते हैं एक तरह का आईना है, रिफ्लेक्शन है, बेस्ड ऑन लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग खाली समय में क्या करते हैं, और उसी के बेसिस पर उन्होंने ऐसे लिखा है. एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ऐसे इज बोर्ड्स. चलिए पढ़िए. The writer highlights the variety of words in the वैरायटी society. वैरायटी Variety of words in the society. The train boards who like talking to people without realizing they might bore other passengers. मतलब क्या हुआ इसमें? तो इस ऐसे का जो लिख जो सब्जेक्ट मैटर है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स इन द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल वो लिखते हैं द ट्रेन बोर्ड्स. अब ट्रेन बोर्ड्स कौन है? पैसेंजर. अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बात करना शुरू कर देते हैं इसको सोचे बगैर कि आप किसी दूसरे पैसेंजर को आप बोर कर रहे हैं. ठीक है. तो एक तरह का फर्स्ट इन्होंने स्टडी किया है कि ट्रेन बोर्ड्स वैसे होते हैं जो चाहे अनचाहे वो बैठ के आपसे गप लड़ाने लगते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, लेकिन दूसरे पैसेंजर्स को वो बहुत बोर करते हैं. पढ़िए, ये सब पढ़ाया हुआ आपका पीपीटी में मैंने दिखाया था सब आपको. चलिए पढ़ लीजिए. The goal boards who discuss of the game, the persons who might have never
in a golf ball. Motoring boats who are दूसरा उन्होंने कहा है गोल्फ एक तरह का स्पोर्ट्स है, क्योंकि गोल्फ खेला जाता है। तो जो गोल्फ खेलते हैं तो अपने गोल्फ के बारे में डिस्कस करते हैं, उन लोगों से डिस्कस करते हैं जिन्होंने कभी गोल्फ का बॉल भी नहीं देखा है। तो इस तरह से वो दूसरों को बोर करते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, मोटरिंग बोर्ड्स। motoring boats who are bored to death on bad roads and slow moving traffic. But for the beggars sitting at both the sides becomes a boon. The political boards who talk of nothing politics. एक मिनट, आगे कहाँ पढ़ रहे हो? मोटरिंग बोर्ड्स, जो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, जो लोग मोटरसाइकिल में बैठे होते हैं और जो बहुत बहुत बड़ा जाम लग जाता है, तो उनके लिए बहुत बोर वाली बात हो जाती है कि वो लोग चुपचाप से बैठे रहते हैं, जाम में फंसे रहते हैं। और स्लो मूविंग ट्रैफिक, जो बहुत धीमे से चलता है ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक की वजह से, जैम की वजह से, और चलाने वाला इंसान बहुत बोर हो जाता है। लेकिन आपके अगल बगल जो जो भिखारी बैठे होते हैं, तो उन लोग के लिए क्या होता है, वो लोग आपके पास गाड़ी के पास आके पैसे मांगने लगते हैं या कोई सामान खरीदने के लिए बोलते हैं। तो ये उन लोग के लिए एक हो जाता है, एक वरदान मिल जाता है कि ऐसी भीड़ लगेगी, जैम लगेगा, तो उन लोग को फायदा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। The political boards who talk of nothing politics. The political boys who talk of nothing but politics. और पॉलिटिकल बोर्ड्स वो होते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में ही बात करते हैं, चाहे किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो या नहीं हो। लेकिन पॉलिटिकल बोर्ड्स वो होते हैं जो हर वक्त पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, उनसे जिनको इंटरेस्ट है, उनसे भी जिनको इंटरेस्ट नहीं है, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है इस तरह से वो उनको भी क्या करते हैं, वो बोर करते हैं। चलिए, The one-way boards, the two-way boards, the childhood boards, route boards, the war boards are all in one way or the other may bore some or many at one point of time or another. ठीक है। द वन वे बोर्ड्स, अब ये तरह तरह के बोर्ड्स अलग अलग, आप समझिएगा। वन वे बोर्ड मतलब कि एक बंदा बात कर रहा है और वो दूसरे को बात करने नहीं देता है। तो वन वे बोर्ड मतलब ट्रैफिक, जब बातचीत हो रही है तो दोनों तरफ से बात करें तो ठीक है। एक बंदा बात कर रहा है और दूसरे को किसी को बात करने वो दे नहीं रहा है, और जिससे वो बात कर रहा है वो बहुत बोर हो जाता है। ठीक है। द टू वे बोर्ड्स मतलब दो बंदे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और इतना ज्यादा बहुत दिन के बाद अगर दो दोस्त मिलते हैं तो उनके पास बहुत सारी बातें होती है करने की, और कुछ देर के बाद जब उनकी स्टॉक खत्म हो जाती है तो दोनों बात करने वाले एक दूसरे को बोर करते हैं, बिकॉज इन लोगों को और कोई बात करने के लिए कोई कोई टॉपिक बचता नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा था द सेल्फिश जायंट में, कि जब वो सेल्फिश जायंट अपने दोस्त के यहाँ चला गया था तो 7 साल तक वो उसके पास रहा, और 7 साल में जितनी बातें करनी थी उसको, वो सारी बातें वो कर चुका होता है, और उसके पास जब कोई टॉपिक नहीं बचता है तो वो क्या सोचता है, तो वो सोचता है, वो बोर होने लग जाता है और कोशिश करता है और चाहता है कि वापस वो अपने घर चला जाए। ठीक है। चाइल्डहुड बोर्स, कभी कोई छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बोर करते हैं, हर सवाल पे सवाल करते हैं, हर चीज पे बोर करते हैं, और कभी कभी एडल्ट जवाब देते हैं, और कभी कभी जो एडल्ट होते हैं वो बहुत ही बोर हो जाते हैं कि बच्चों के बेतुके सवाल से। ठीक है। दूसरा है रूट बोर्स। रूट बोर्स वो होता है कि जो कोई रास्ता भटक गया, भूल गया है, कोई रास्ता बताने वाला मिल जाता है, जो जिसको पता है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रास्ता खुद नहीं पता है और आप दूसरे को बताने चले हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसको आपसे किसी ने पूछा नहीं रास्ता, लेकिन आप जबरन आप बता रहे हैं। सो दे बिकम रूट बोर्ड्स, दे डू नॉट हैव एनी आइडिया, बट दे रॉन्ग रूट बता देते हैं, और वो कहाँ से कहाँ बच्चे पहुंच जाते हैं और लोग पहुंच जाते हैं। और लास्ट है द वॉर फोर्स, जिन्होंने किसी लड़ाई में काम किया है, किसी वॉर में काम, अगर वो देखा है उन्होंने या सुना है या उसमें वॉर में रहे होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो हर वक्त वॉर के बारे में बात करते हैं, और कई बार एक ही कहानियां होती हैं, रिपीटेडली वही बात करते हैं, उनके पास बैठिए तो वही
लड़ाई की कहानियां, वही वॉर के कहानियां, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड, तो ये सब होती रहता है। तो ये सब बातें उनको दूसरे लोगों को बोर करते हैं। द वॉर बोर्स ऑल इन वन वे और द अदर। और ये सारी के सारे जो बोर्स के बारे में बताया गया है, वो सब एक एक ना एक तरह से किसी न किसी को किसी न किसी टाइम पे जरूर कोई ना कोई बोर करते रहते हैं। और यहाँ तक राइटर ने खुद भी कहा है, जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो वो भी उनको भी किसी ने कहा था कि तुम बहुत बड़े बॉम्ब बोर हो, मतलब कि इतना ज्यादा तुम बोर करते हो, तो ये तुम बोर ही नहीं, तुम तो बोर का पूरा बॉम्ब हो। फिर तुमको देख करके लोग भाग जाएंगे कि ये यहाँ पर आ गया बॉम्ब बोर। सो दिस वाज ऑल विच वाज इन दी वैरायटी ऑफ बोर्स इन द सोसाइटी। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एंड क्वेश्चन आंसर आप करके दिखाइएगा हमको। ठीक है, they are all illustrative of the typical bores that we come across in our daily life. The writer makes a revelation, मतलब राइटर ने खुद इस बात को बताया है that he himself, that वो खुद भी बहुत बड़ा, that he was a childhood bore and had bored many who happened to meet him. और बचपन में वो कई एक लोगों को वो बोर करते आ रहे थे, अब तो बड़े हो गए। ठीक है, तो द राइटर हिमसेल्फ वाज ही रिवील्ड, रिवीलेशन का मतलब होता है वो सामने लाते हैं इस बात को। चलिए आगे बढ़ जाइए, लाइफ फिलोसफी बाय जवाहरलाल नेहरू। चलिए वो कोई और पढ़िए, फिनिश इट अप। पढ़िए और कोई पढ़ी। J.L. Nehru. Life Philosophy by J.L. Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India, was also the architect of modern India. He was born great and also achieved greatness by his vision, hard labor, sincerity, honesty, patriotism, and great intellectual powers. Born on November 14, 1889, Prayagraj. Parents Swarup Rani Nehru, Motilal Nehru. It was he who gave us the slogan Aram Haram Hai. He was always full of optimism, vitality, vigor, enthusiasm, and activity. Enthusiasm. He was a leader of our masses and beloved to them. Their deep love and respect for him always enthused, inspired, and sustained him. The good of the masses was ever at his heart. He had undertaken many projects for the welfare of them and the prosperity of the country. He set up the National Planning Commission with himself as its first chairman. All right, you have read up till the first paragraph. Now tell me in your own words what you have read. Please explain. जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो English. अच्छा, only English. Jawaharlal Nehru was born on 14th November and he was a great man. He was the first Prime Minister and he was very hard worker, very visionist person, very honest person, and a great intellectual person. He was very optimistic. He also gave us a slogan, Aram Haram Hai. He was the chairman of National Planning Commission, which he set up himself. He inspired a lot of persons and sustained them with their love and respect. He was always optimistic, always in activities, always active. And he had a rose in his pocket, as it was a symbol for the love of children. वो भी लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? This is my language. Jawaharlal Nehru. Okay, why do you think he always had a rose pinned in his attire? He thought
his belief was that the children are like roses, soft, beautiful, and always full And of he saw every child as a rose. That rose. is Yes, why, yes. So that is why he pinned a rose in his pocket, which which always reminded him that the children of the future of India, yes, and they should be nurtured very carefully because they have they to are one the day come future of up nation. and yes, carry the dreams with carry the legacy forward. Yes, ma'am, they are the dreamers. Yes. All right. Continue. Jawaharlal Nehru was a social and political thinker. Nehru came to symbolize India on the day of his death. The mother in Pondicherry gave the following message: Nehru leaves his body, but his soul is one with the soul of India that lives for eternity. Yeah. The following essay was written by Nehru during his imprisonment in Ahmednagar Fort Kolkata camp during the year 1942 to 1945 and the form part of his book The Discovery of India. As he speaks of his own life's philosophy, one can sense that Nehru is impatient with all forms of religion, philosophy, metaphysics. Metaphysics is a field of philosophy that is generally focused on how reality and the universe begin. Mysticism, a spiritual belief stating that a connection can be obtained with God or the spirit through thoughts and meditation. An example of मैम थोड़ा सा वो कर्सर हटा दीजिए. Mysticism is believing that a direct connection can be made with God through sitting and thinking, and spirituality that are primarily concerned with the existence of the other world beyond this one. He has a little sympathy with people who are absorbed in finding an answer to the riddles of the universe as it leads them away from the individuals and social problems of today. Nehru's interest is in this world, and the cornerstone of his philosophy is deep belief in a man's ability to progress. He All right. declares, All right. All right. You read one paragraph. Now explain. Ma'am, Jawaharlal Nehru was a political thinker and a social thinker. When he leaves his body, mother in Pondicherry gave his statement that he may be dead, but his soul remains in India for eternity. The following essay is written by Nehru. This is the time when he was in Ahmednagar in prison, 1942 to 1945. And the discovery of India was the former part. In this essay, he speaks about his own life philosophy, about the religion, philosophy, metaphysics, mysticism, and spirituality. The spirituality means the world beyond this world, and the mysticism means connection with God through meditation or something else. And metaphysics is the physics behind the universe. Uh, he was he was not fond of those people who uh, who is in the journey of finding answers of universe as he stated them and away from the individuals and social problem of today. Means he do not like so much of those people who are not dealing with the problems of everydays and always on the journey of finding answers of the riddles of the universe. His interest in the world and the cornerstone of the philosophy is deep belief in man's ability to progress. Means he believes in man's ability to achieve something that the goal was set for them. He declares the statement: "A living philosophy must answer the problems of today." He always thought about the world as you have come to this world as a person to answer the problems, answer your own problems, answer the world's problem, social problems. You have not been sent to this world to meditate, to find the answers of why am I alive or life beyond death or what is happening, and you can have a connection with God if you sit and meditate. For such people, Nehru had no sympathy. His only philosophy was that you have come to this world
and you have to solve the problems of this world. Right? So you have come to work, you have to come to solve problems. And he did not give much importance to science also, except that he wanted to use science and technology only to solve problems of the people, of the masses, of whatever, whoever came to him, he had to solve his problems. So this was the sole reason why Nehru said did not like anything which dealt with spirituality or mysticism or meditation. That was not his cup of tea. He only wanted to solve the problems, day-to-day problems, because he felt away from the individual and social problems of today, we cannot live. And Nehru's interest is in this world. He was always concerned about this world, not the world beyond. And this is the cornerstone of his philosophy, which is a deep belief in man's ability to progress. He believes that man is capable of achieving much more than he knows. You can only achieve by working. The words learning by doing, and doing it, while doing it, you learn a lot. So that is why the slogan Aram Haram hai. You're not sent to this world to take rest, right? Because you are there, you've been sent for some particular job. Everybody is assigned, delegated for some work, right? So you will not be paid anything. If you're in an office, you have to do something or the other. So this world, according to Nehru, was an office, and everybody is assigned some or delegated some work. So this was his finance philosophy, that you need to work. You are there to work, which is the cornerstone of his philosophy. So very well, किसने इसको explain किया है? Rohit. Good. Now the revision has come to an end, except for Merchant of Venice and the Ode to the Nightingale and Ode to the West Wind. The PPTs I've already showed you in the earlier classes. In revision, I'm reading the content which I have shared with you. Right. So in the next class, we'll take a look at the Merchant of Venice, and then the poetries, the Ode to Nightingale and Ode to the West Wind, and then we'll wrap up. Anybody has any question? We dealt with On Being a Boar and Jawaharlal Nehru's life philosophy. Anybody has any question? Nahi puchna hai, then I will be asking you questions. So you're on the safe side if you ask questions. Otherwise, I'll be asking you. Yeah. No, ma'am. No, ma'am. Fine. Ma'am, we have studied the essay Nehru ji. We saw the vision by someone wrote about him. Is this really true? How do we clarify that? He is dead. We cannot ask him. You cannot ask him, but there's so much has been written about him, so much he has written himself. And he was such a wonderful, fantastic writer. You must take a look at the letters which he wrote to his daughter from the prison. His writing is beautiful. You have not seen what he writes and how he used to write. But then he has left behind so much. उनकी चीजों को पढ़िए. See the style, how Nehru used to write. And he was an ace English writer. के बारे में लोगों ने लिखा है, लेकिन उनकी चीजों को पढ़िए ना. तो what was his philosophy of life? It was also written that till the age of 12 years, was very young, he was a very obedient child. He used to follow whatever his parents told him. But as he started maturing, he did not believe, he stopped it. Some things he did not bother about.
Some things he carried, some things he dumped. This is how he started changing. Anybody else? Any question? You all have not made any presentation. This is the only batch who has not given any presentation, no activity, nothing. Because even though you have online classes, you can still come up with some activity. You can choose any essay, any topic, any poetry, कोई भी essay, कोई भी poetry, कोई भी story. आप चूज कीजिए and make a presentation. ठीक है? Next time, ma'am. Yes, next time. Please be prepared. Any essay, any story, any poetry, Essay like poem. anything. उससे क्या होगा ना, बहुत तरह की चीजें सामने आएगी और बहुत लोगों का डाउट क्लियर होगा. Everybody take different topics. ठीक है? Discuss amongst yourselves and take a different topic, everybody. Right? So let us do this in the next class. Right? Please respond. Yes, ma'am. Okay, ma'am. आपको जो भी पोइट्री लेनी है, जो भी स्टोरी लेनी है, जो भी ऐसे लेनी है, ड्रामा लेना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस लेना है, किसी मर्चेंट ऑफ वेनिस को कोई किसी कैरेक्टर के बारे में बात करनी है, तो आप एनी टॉपिक, एनीथिंग फ्रॉम द सिलेबस. ठीक है? And people who are absent, they can also be informed. मैम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा तब. ठीक है, मैसेज कर देंगे अपने ग्रुप में. ठीक. चलिए.